सभी को जय श्री माता जी। उपस्थित सभी सहजी भाई बहनों का आज के शाम के सामूहिक ध्यान सत्र में स्वागत है। वी वेलकम ऑल द सहजी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन टुडेज इवनिंग कलेक्टिव मेडिटेशन। अपने दोनों हाथ जोड़कर श्री माता जी को हृदयपूर्वक वंदन करेंगे। बाय जॉइनिंग अवर बोथ द हैंड्स with our whole heart, we will bow to Shri Mataji. सामूहिक बंधन, let's have collective बंधन। अपने चित्त को श्री माता जी की प्रतिमा पर स्थिर करते हैं। वी विल कीप आवर अटेंशन ऑन श्री माता जी फोटोग्राफ। अपने दोनों हाथों को हृदय स्तर पर लेके आएंगे। लेट्स ब्रिंग अवर बोथ द हैंड्स क्लोज टू आवर हार्ट। अपने दोनों हाथों पर परम चैतन्य का अनुभव करते हैं। वी विल ट्राई टू फील द वाइब्रेशंस ऑन आवर बोथ द हैंड्स। श्री माता जी से आज के ध्यान की अनुमति मांगते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर आप हमें आज के सामूहिक ध्यान में बैठने की अनुमति प्रदान करें। श्री माता जी, कृपया आप ही हमें ध्यान में उतारिए। श्री माता जी, प्लीज ग्रांट अस द परमिशन टू सिट इन टुडेज इवनिंग मेडिटेशन। प्लीज ब्रिंग अस इनटू मेडिटेटिव स्टेट। अपने दोनों हाथों को गोद में लेते हैं। धीरे धीरे हम अपनी आंखें बंद करेंगे। ब्रिंग अवर बोथ द हैंड्स ऑन लैप एंड वी विल स्लोली क्लोज अवर आइज। चित्त को सहस्त्रार पर स्थिर करेंगे। कीप आवर अटेंशन ऑन आवर सहस्त्रार। तीन महामंत्र, उसके पश्चात श्री गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी हम संतुलन करेंगे। दाहिना हाथ धरती पर, बायां हाथ श्री माता जी की ओर। अपने संपूर्ण चित्त को ईड़ा नाड़ी पर स्थिर करते हैं। फॉर बैलेंसिंग, लेट्स कीप आवर राइट हैंड ऑन मदर अर्थ, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स श्री माता जी। कीप आवर कंप्लीट अटेंशन ऑन आवर लेफ्ट चैनल। प्रार्थना करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर आप ही हमारी ईड़ा नाड़ी पर के सभी दोष, बाधाएं, जड़त्व, अशुद्ध इच्छाएं इस धरणी तत्व में निकाल दीजिए। कृपया हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कीजिए। श्री माता जी, by your grace, please remove all the negative elements and impure desire from our left channel into this Mother Earth. Please give us the power of pure desire. धीरे से अपने दाहिने हाथ को गोद में लेते हैं, बायां हाथ आकाश की ओर। टेक अवर राइट हैंड ऑन लैप, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स स्काई। चित्त को पिंगला नाड़ी पर स्थिर करते हैं। कीप अवर अटेंशन ऑन अवर राइट चैनल। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारी पिंगला नाड़ी पर के सभी दोष, बाधाएं, अतिरिक्त गर्मी, अहंकार इस आकाश तत्व में निकाल दीजिए। कृपया हमें शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कीजिए। श्री माता जी, by your grace, please remove all the negative elements, ego, excess heat from our right channel into this ether element. Please give us the power of pure action. धीरे से अपने बायां हाथ को गोद में लेते हैं। लेट्स टेक अवर लेफ्ट हैंड ऑन लैप। चित्त को सुषुम्ना नाड़ी पर स्थिर करते हैं। कीप अवर अटेंशन ऑन अवर सेंटर चैनल। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। कृपया हमें पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। श्री माता जी,
By your grace, please cleanse our center channel. Please bring us into complete balance state. श्री माता जी, हमने अपने सारे विचार, चिंताएं आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। कृपया हमें इससे परे ले जाइए। श्री माता जी, वी सरेंडर ऑल आवर थॉट्स, all our worries at your holy lotus feet. Please take us beyond this. अभी हम अपने चित्त को मूलाधार चक्र में स्थिर करेंगे। Keep our attention in मूलाधार चक्र। श्री माता जी, कृपा करके मुझे अबोध बना दीजिए। प्लीज मेक मी इनोसेंट। चित्त को स्वाधिष्ठान चक्र में लेते हैं। श्री माता जी, कृपया मुझे निर्मल विद्या, शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। श्री माता जी, प्लीज ग्रांट अस द प्योर नॉलेज। धीरे से चित्त को नाभि चक्र में स्थिर करते हैं। श्री माता जी, कृपया मुझे शांति और समाधान दीजिए। प्लीज ग्रांट मी द पीस एंड सेटिस्फैक्शन। चित्त को भवसागर में लेते हैं। कीप आवर अटेंशन इन भवसागर। श्री माता जी, कृपया मुझे स्वयं का गुरु बना दीजिए। प्लीज मेक मी माय ओन गुरु। चित्त को अनाहत चक्र में लेते हैं। श्री माता जी, कृपया मुझे निर्भय बना दीजिए। श्री माता जी, प्लीज मेक मी फियरलेस।
चित्त को विशुद्धि चक्र पर स्थिर करते हैं। श्री माता जी, कृपया मुझे निर्लिप्त साक्षी बना दीजिए। प्लीज ग्रांट मी द कंप्लीट विटनेस स्टेट। चित्त को आज्ञा चक्र में लेते हैं। श्री माता जी, कृपया मुझे क्षमाशील एवं त्यागीवान व्यक्ति बना दीजिए। प्लीज ब्लेस अस विद द क्वालिटी ऑफ सैक्रिफाइस एंड फॉरगिवनेस। चित्त को सहस्त्रार पर लेते हैं। कीप आवर कंप्लीट अटेंशन ऑन सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर आप ही हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कर आज के ध्यान में हमें निर्विचारिता प्रदान करें। श्री माता जी, प्लीज गिव अस द स्टेबिलिटी इन आवर सेल्फ रियलाइजेशन। प्लीज गिव अस द कंप्लीट थॉटलेस अवेयरनेस। अपने सहस्त्रार चक्र पर होने वाली अनुभूति को महसूस करते हैं। We will try to feel the vibrations on our सहस्त्रार चक्र। इसी अवस्था में हम कुछ देर ध्यान करेंगे।
ध्यान की इस स्थिति में हम श्री माता जी की अमृतवाणी को आत्मसात करते हैं। आज की अमृतवाणी है श्री गणेश पूजा अमेरिका 7 सितंबर 1986। Has to be thrown away. My name itself means purity. You can do it. You are empowered to do it. You have a kundalini to do it. But the first thing you have to do is to cleanse that. And the rest, you don't have to worry. Shri Ganesha will look after it. One chakra you keep clean, the rest is looked after. All your incurable diseases, right from all muscular troubles like myelitis and all that, all your incurable diseases, right from cancer onwards, all your psychosomatic problems, right from schizophrenia and everything, come because of the disturbance in Muladhara. When the roots are not all right, how can you cure the tree? If the roots are all right, then any medicine can reach any center, any area, any place, any fruit. But if the roots are not all right, how can you work it out? Today you have called me here to worship Shri Ganesha within me. Shri Ganesha within me is a powerful identity. While worshipping him, you have to know that such a powerful thing you have to establish within yourself. And by that establishment, you have to manifest the powers of Shri Ganesha. And the power of Shri Ganesha's greatness is auspiciousness. It's a coefficient. It's a formula, we can say, in scientific language, that emits auspiciousness. It's a magnet in the Mother Earth. The same magnet is within you, which is Shri Ganesh. You leave me alone and I can tell you which is the north, south, east, west. Close my eyes, still I'll tell you. You know there are so many birds who fly out all the way to Australia, to Siberia, because they have that magnet with them. They have that innocence with them. There are so many fishes which have got actual magnet placed in them. Scientists should find out. In the same way, Shri Ganesha within us is magnetic.
So a person who has Shri Ganesha awakened within himself becomes magnetic. And magnet attracts the steel, not dried leaves. It does not steel. And steel is like the Guru Tattva. The man with the steel, say, man of steel, a person who has character, conviction, and who cannot be dominated by temptations is a man of steel. So this magnet attracts the steel. Steel has only one bad thing about it, that it is not pliable. It's rather dry. But the magnet attracts means it creates that special quality in the steel that it moves towards the magnet. In the same way, when this magnet is awakened within you, you'll be amazed. Instead of people running away from your ashrams, they'll be running towards you. I find it impossible. I go to any house. If they come to know I'm there, God save me. Anywhere. Any place. So what is this magnet? It's pure love. Is pure love. And the concept of pure love is that it doesn't depend on anything whatsoever but on itself. It is the support of itself. It's like light that spreads just by its own nature. It doesn't want anything, doesn't expect anything. Just spreads all over and enlightens other people's heart. That's why they get attracted. Those who have not even seen me, those who have not even known me, just with my name I have seen. Places like Calcutta, we had such a problem, such crowds, that they said we have to call the police. I said there's no need to call the police, but we'll manage somehow. In Pune, we had such crowds that the fellow who gave us the hall got a fright. He said, Mother, I'll give you a very big area where you can sit down in a big open place, but I am sorry, my hall, all will be finished. I said, you don't worry. Everything will be in proper place. We had such crowds that people were sitting on the ground, on the staircase, everywhere. Until I spoke, nobody moved an inch. See, like a picture. And I spoke for 1.5 hours. Just like a picture. No movement of hand, feet, eyes, nothing. Just sitting like a picture. And the gentleman who owned that hall had never seen such a thing before. Throughout for 1.5 hours, no movement of any kind. What is it that working? Is the magnet. Even if you are the steel, it will attract. But if you are a magnet, then it will attract in such a way that it will never leave this magnet. So for yoga, it is important that you fix up your magnets of Shri Ganesha, who is the childlike
personality. A child, there's one child, everybody is attracted towards the child. One child gets stuck up somewhere in the air. Whether you are a Russian, American, or an Arab, everybody would be worried about the child, what's happening to the child. They will not think it's an Arab child or an American child, no. Unless until it's a devil. Why this attraction for children? Because their magnets are intact. Their ego has not yet developed. Our ego had to develop because we had to decide in our own freedom what is right and what is wrong. So the ego developed was all right. Up to a point we should have developed our ego. But we overdeveloped it. And overdeveloped it. Overlapped the superego also. No conditioning. Nothing. We'll do whatever we like. Today we are wearing a half pant, tomorrow we'll wear a long pant, all right? Then we'll cut our hair or we'll do this, we'll do that. No conditioning of any kind. All superego was also covered. Ego. This ego would have been all right if you had kept your Ganesha tattva. And what is that? Is the wisdom power of Ganesha. The second power of Ganesha is that he gives you wisdom. If you see a farmer and a big professor or a very well educated man and talk to both of them, you will find the farmer has much more wisdom than this MAD, PhD. Why? Because he deals with Mother Earth every day. He knows the living process. He knows about the innocence of the Mother Earth. So an innocent person is the wisest among. A child who is innocent is much wiser than 10 ego-oriented people. So the second capacity of Shri Ganesha is that you become a wise person. When you speak, people start looking at you. You speak like Kabira, you speak like Nanaka. You speak like something that makes people feel their spirit. This is what I call is a Sahaja. A Sahajogi who does not have wisdom is good for nothing. He comes to Sahajayoga and he is like a bull in a china shop. Goes on hitting this person and hitting that person and hitting that person. And when you ask this three-wounded person, they say that bull, the same bull. Everybody reports about the same bull. Oh, that's the one. All right. So it grants you wisdom. When you have the power of Shri Ganesha, your eyes are radiant. You get a spark in your eye, a light in your eye. When he is enlightened in you, then you cannot look at anyone with lust and greed. But this glance is so powerful that even one glance is sufficient to purify thousands of people. Just the opening of the eyes are necessary. And you find whole thing changes into a beautiful morning from a complete
dark night. Glance can awaken the Kundalini. The mother Kundalini cannot move unless and until Shri Ganesha gives the permission. He is like the Vice Chancellor sitting on all the chakras. He has to certify, all right, passed, go. On every chakra. And when the Kundalini rises, Shri Ganesha is awakened, otherwise Kundalini cannot rise. But then when he sleeps down, Kundalini is sucked by. Now we think we have lost our innocence. That's not easy to be lost. It is not destructible. Only thing, what you have done is to cover it with something that cannot allow Sri Ganesha's principle to manifest in us. You have pushed it down. You have brought pressure on it. You have brought loads and loads of nonsense on it. That's all. But it never dies. It is an eternal principle of the whole universe. The another quality of a person who is endowed with Sri Ganesha's powers is that he removes all the hurdles. If one person of this nature is in some place, all the rest of the people who are nearby will be saved if there's an accident or if there's any problem which is destructive. All of them will be saved. You will find this happening too. He being the Ganapati, he is now the master of all the Ganas. He guides you. Sahajayoga cannot work out without Shri Ganesh. He is the one who is Sahaja. He is the one who creates all spontaneity of the world. He is the one who takes you to the right path. He is the one who gives you everything easily. He is the one who creates all the chamatkaras, all the magic, all the miracles of the world. He is the Ganapati. He is the one who is sitting on Ganas. In the sense that he is like the king of all the Ganas. The one who has pleased Sri Ganesha has pleased all the gods and goddesses. Because all the gods and goddesses are pleasing Sri Ganesha. So what is the need? And Sri Ganesha is very clever. He knows. Please. His mother is the only simple thing he has to do. To have all the powers of the world. Just keep the mother pleased. There are so many qualities of Sri Ganesha which can be described. He is the one who gives us the joy of eating. If you eat some food, you may like it, you may not like it. But he is the one who will tell you this is made by Sajubis. It's made by your mother. That means he gives you the taste of love in the food that is good for you. Because he is love. He gives you the ideas how to express your love.
Once they asked me to sing a song. I used to sing very well once upon a time. But then after lecturing so many times, you see, I think I lost my voice. I couldn't sing well. I thought so. One day they asked me to sing a song, and I thought of some song and sang to them. And after a year or so in a program, they said, Mother, we want to sing you a song. This was a song unknown to everyone. I don't know from where they got it, from where they made the tune. They started singing the same song. And such joy, it all became waves of tears in my eyes. I couldn't control my joy. Now, all this feeling of joy comes from the devices produced by Sri Ganesha. He's busy creating relationships, beautiful. How? In a birthday, a child's birthday. What do we say? All right. So tomorrow morning, there's a bird is going to drop a present for you. And then the child gets up and sees there's no bird. It's only Ganesha who has given that. We can say he's a Santa Claus. He gives you ways and methods, and he tells you how to delicately build up relationships, pure relationships. How you hide, how you wrap a little present, just put it there, and a person who has to take it sees it, oh God. And then you see that. Flowers, which you suddenly bring out and put there, is all Sri Ganesha's efforts, his ways, his suggestions. Among the creation, flowers are expressing Sri Ganesha's essence. And the essence of Sri Ganesha comes from the Mother Earth's essence, is the fragrance. So a person who is endowed with Sri Ganesha's blessings has fragrance. Sometimes chandan, sometimes roses, sometimes this gardenia. You just don't know from where the fragrance is coming. The fragrance is coming from Sri Ganesh. And that is what is the magnet within you. Such a person is fragrant, absolutely fragrant all the time. Sri Ganesha emits all kinds of fragrance from such a person. And that you can only feel when your Sri Ganesha is all right. There's no end to the description of this great deity within you. He's just settled down there. He's all the time there, waiting to be cleansed out, for him to raise his head like a lotus in the mud, to just help it out by respecting it. And he'll be there fragrant within you. So important for this country, where we have raised our head without surrendering it to the Virata, to the collectivity, to Sri Krishna. We have raised our head, which Sri Ganesha will bow down our head for all the bounties that God has bestowed upon us. All arrogance will disappear at the lotus feet of Sri Ganesh. He'll give us wisdom.
He'll give us sense to understand. He'll give us power to overcome our arrogance that is within us. He is the one who is the giver of knowledge. He is the one who is given us light. Many people in India also worship Sri Ganesha. Go on, Sri Ganesh, Sri Ganesh, Sri Ganesh, Sri Ganesh. And do all kinds of funny things. That's like cheating yourself unnecessarily. It's so simple to establish Sri Ganesh within. But understand that it is vital that you people who are Sahajogis should establish Sri Ganesh, which is a silent power within it. It doesn't talk. It's a silent power which acts. Just a power that's dynamic, without any noise, without any show. And that is what I would say that today, when I have said all these things from my heart, you, the Sahajogis, will establish Sri Ganesha within you. And from you, you will emit such powers that others will be able to establish their Sri Ganesha in this country. May God bless you.
चित्त को सहस्त्रार पर स्थिर करते हैं। श्री आदि शक्ति मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। आरती की तैयारी करते हैं।
श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः त्वमेव साक्षात् श्री कल्के साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः त्वमेव साक्षात् श्री कल्के साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः श्री निर्मला देवी नमो नमः श्री निर्मला देवी नमो नमः बोलो श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी की जय।
चित्त को सहस्त्रार में रखते हैं। श्री माता जी के श्री चरणों में प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज का यह सामूहिक ध्यान हम आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आज का यह ध्यान आपने हमसे निर्विचार स्थिति में करवा लिया तथा हमें चैतन्य से आशीर्वादित किया। इसके लिए हम आपके हृदय से ऋणी हैं। ध्यान करते समय अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए कृपया हमें क्षमा करें। श्री माता जी, आज के अमृतवाणी में जो ज्ञान आपने हमें दिया वह हमारे आचरण में आ सके, ऐसी शक्ति कृपया हमें प्रदान करें। श्री माता जी, निसर्ग का जो असंतुलन हुआ है वह आपकी कृपा में संतुलित हो जाए और पूरे भारतवर्ष में संतुलित मात्रा में वर्षा हो जाए। यही प्रार्थना हम आपके श्री चरणों में करते हैं। श्री माता जी, आपके श्री चरणों में हमारे कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। Let's offer our prayer in the holy lotus feet of Shri Mataji. Shri Mataji, we surrender today's evening meditation at your holy lotus feet. Shri Mataji, by your grace, we were able to feel the joy and the vibrations and the knowledge which you have given us, for which we are always thankful to you. Please forgive us if we have committed any mistakes. O Mother, let the whole knowledge which you have given us in today's speech get established within us. We offer our deepest salutations to your holy lotus feet again and again. जय श्री माता जी। सामूहिक बंधन लेते हैं। लेट्स हैव कलेक्टिव बंधन।
आज की सूचना इस प्रकार। लर्निंग सहजयोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से नए साधकों के लिए अगला सत्र 16 सितंबर को शाम 6:30 बजे होगा। इस सत्र में आज्ञा चक्र इस विषय में जानकारी मिलेगी। सहजयोग राष्ट्रीय सेमिनार और श्री गणेश पूजा 2023 15 सितंबर से 17 सितंबर तक चेन्नई तमिलनाडु यहाँ आयोजित की गई है। 15 सितंबर को शाम 5 बजे हवन होगा। 16 सितंबर को सेमिनार और 17 सितंबर को सुबह 10 बजे श्री गणेश पूजा होगी। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों पर संपर्क करें। 19 सितंबर से 27 सितंबर तक पुणे प्रतिष्ठान में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। प्रतिदिन शाम के ध्यान के बाद मातृवंदना द्वारा सहज भजन की लाइव प्रस्तुति होगी। भारत के अलग अलग प्रदेश की युवा शक्ति अपनी कला प्रस्तुति देंगे। इस कार्यक्रम का आप ऑनलाइन और ऑफलाइन भी आनंद ले सकते हैं। सहजयोग राष्ट्रीय सेमिनार और श्री नवरात्रि पूजा 2023 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2023 तक गोरखपुर, उत्तर प्रदेश यहाँ आयोजित की गई है। 20 अक्टूबर को दोपहर 4 बजे हवन होगा। 21 अक्टूबर को सेमिनार और 22 अक्टूबर को सुबह 10 बजे श्री नवरात्रि पूजा होगी। सहजयोग अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और दिवाली पूजा 2023 16 नवंबर से 17 नवंबर तक जयपुर, राजस्थान यहाँ आयोजित की गई है। कल के कार्यक्रम इस प्रकार। अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन सुबह 4 बजे से प्रसारित होगा। सुबह का ध्यान 5:30 बजे से लाइव प्रसारित होगा। शाम का ध्यान 7 बजे से लाइव प्रसारित होगा। आज का ध्यान सत्र यही संपन्न होता है। जय श्री माताजी। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो आप श्रीमान, करते हो आप श्रीमान, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ
कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। करते हो आप श्री माँ, करते हो आप श्री माँ, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरा साथ है गुलाम, अब गुलफाम हो रहा है। तेरा साथ है गुलाम, गुलफाम हो रहा है। तेरा साथ है गुलाम, गुलफाम हो रहा है। करते हो आप श्री माँ, करते हो आप श्री माँ, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ कामिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ कामिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मीठी नहीं है वाणी, गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी दया से निर्मल ये कमाल हो रहा है। तेरी दया से निर्मल ये कमाल हो रहा है। तेरी दया से निर्मल ये कमाल हो रहा है। करते हो आप श्री माँ, करते हो आप श्री माँ, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
शक्ति माता जी, तेरे चरणों में आया हूँ मैं। शाम सवेरे गुण तेरे गाऊं, तेरा ही जाया हूँ मैं। श्री माँ तेरा ही जाया हूँ मैं। आदिशक्ति माता जी, तेरे चरणों में आया हूँ मैं। शाम सवेरे गुण तेरे गाऊं, तेरा ही जाया हूँ मैं। श्री माँ तेरा ही जाया हूँ मैं। तू आदिशक्ति सहस्त्रार विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू आदिशक्ति सहस्रार विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू आदिशक्ति सहस्त्रार विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। आदिशक्ति माता जी, तेरे चरणों में आया हूँ मैं। शाम सवेरे गुण तेरे गाऊं, तेरा ही जाया हूँ मैं। श्री माँ तेरा ही जाया हूँ मैं। श्री माँ तेरा ही जाया हूँ मैं। तू ही भवानी, तू महामाया, तुझ में ही सारा विश्व समाया। तू ही भवानी, तू महामाया, तुझ में ही सारा विश्व समाया। तू ही भवानी, तू महामाया, तुझ में ही सारा विश्व समाया। आदिशक्ति माता जी, तेरे चरणों में आया हूँ मैं। शाम सवेरे गुण तेरे गाऊं, तेरा ही जाया हूँ मैं। श्री माँ तेरा ही जाया हूँ मैं। श्री माँ तेरा ही जाया हूँ मैं। तू ही सदा शिव अंतर्यामी, देवी देवों की तुम ही हो स्वामी। तू ही सदाशिव अंतर्यामी, देवी देवों की तुम ही हो स्वामी। तू ही सदा शिव अंतर्यामी, देवी देवों की तुम ही हो स्वामी। आदिशक्ति माता जी, तेरे चरणों में आया हूँ मैं। शाम सवेरे गुण तेरे गाऊं, तेरा ही जाया हूँ मैं। श्री माँ तेरा ही जाया हूँ मैं। श्री माँ तेरा ही जाया हूँ मैं। आदिशक्ति माता